Good morning, everyone. This is Sumesh Khandelwal, and today we are here to discuss the things which are uh, the opportunities for 12th science bio students, that what all courses they can do to build up their strong career. So first of all, the current scenario is this that NEET is already happened last week, and NEET is something which is a very important exam or entrance exam for Indian students who has taken science bio in their 11th and 12th stream, and whatever they want to do, that will be decided by NEET. NEET plays a very vital role, very important role for science bio students. If they don't give NEET, then they are not eligible for any medical program. They cannot become a doctor, they cannot choose MBBS or MBBS course, neither India nor abroad. If they fail NEET, then also the same, they cannot go ahead for any medicine program. Now, if at what score one can get what opportunity, I will also be discussing in this webinar. I will also be discussing that what if one do not want to become a doctor or is not eligible for become a doctor, then what are the options, opportunities are available for Indian students. So welcome all of you. This is Sumesh Khandelwal, co-founder Mentor Universe, and I am also taking care of Mentor MBBS department, which is taking care of 12th science bio students profile and their career. So, as you know, that NEET is a very important program. The highest marks in NEET is 720. And in India, the professional courses are being, seats of professional courses are being allotted as per the our caste categories also. So we cannot ignore these kind of categories. So if there is general category, then reserve category, then a handicapped people also there. So if somebody wants to become a doctor or take a course of MBBS, then they must have 50 percentile if they are falling into general category. If they are falling into reserve category, then this score will be lower down to 40 percentile. And if the general handicap, then it is 45%. Last year, 50 percentile came on 137 marks. So if somebody has 137 marks last year and out of 720, then they are eligible to file their profile for MBBS counseling. So, but if somebody has below than that, below the required percentile, then they cannot even apply for counseling. Then they can have to choose some other courses, which we will be going to tell. So if a general category, and now admissions in MBBS in India happens on merit. NEET makes you eligible. NEET qualification of 50 percentile or 40 percentile makes you eligible, but it doesn't mean that you will get seat. You will get seat according to merit. Last year, for a general category student, they have a cutoff of around 550, 560 marks in NEET to get government medical college. For reserve category, it was around 425, 430 and above to get government medical colleges. If somebody has less than that, then they will be having around, they have to go to private self-financed colleges. Now,
If we compare between self-financed colleges and government medical colleges, there is a drastic difference. In government, the fees is very less, but the profile of doctors and the population of patients is very good. In private medical colleges, the fees is very huge, high. Profile of doctors is mediocre, and patients flow is very less. So we can say that if we are getting a government seat in India, then nothing best like that. But Indian private medical colleges are not option of Indian government medical colleges. If we are not able to get admission in, if we are not able to get admission in government medical colleges, then we have two choices. One, to pay hefty fees of Indian private medical colleges, or to go abroad and do our medical education from any good medical university. If we go to abroad, then what are the things we need to consider? I will also be telling you. I will also be sharing here that which country means what, which country offering us what, at what price, what quality. I will also be discussing. I will also be discussing that if not MBBS, then what are the options in abroad available for us? So if we want to do MBBS abroad, then we have options like China, Ukraine, Russia, Georgia, Philippines, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Mauritius, Caribbean, Malaysia. Okay, so these are the options where Indian students used to go. If we divide them, then there are some, we have to learn language, somewhere we have to learn to eat some different kind of food, which is not Indian food. Somewhere in some country, we will get a better food, a better Indian food. Somewhere we have to change our eating habit. Somewhere we have to learn language. Somewhere it's in English. Somewhere the duration is 6 years. Somewhere the duration is 7 years. Somewhere the fees is around 1 CR. Somewhere it is fees is 25 lakhs. Somewhere it is 35 lakhs. So there are a lot of options in abroad medical colleges, which we will be discussing in length in our next webinar, which is happening next week. Currently, this much information also I want to give about MBBS, that if we are going to abroad, then we have to see 4 important things. What are the 4 important things when we are going to abroad? That first is that the course should be in English, and that course should be registered with WHO as an English program in medicine. That is the most important thing out of 4, which NMC inculcates. As you know, that now NMC governing the Indian medical education. Earlier, MCI was governing. At that time, MCI rule was there, but now NMC is governing. So we have to follow NMC laws, and NMC has 4 very strong laws, which I am sharing here. One, that your course should be English. Second, the minimum duration of that course should be 54 months. Your course should be minimum of 54 months, means 4.5 years. So if somewhere it is 4 years, then that is not eligible. 4 years should be a medical program. Like in Philippines, it was pre-medical and medical. So as of now, that may be not considered, because NMC want to consider only medical program. So at current scenario, as per today's rule, we have to go to the program in Philippines also, if we choose Philippines, which is above 4.5 years. Other than they are pre-medical. So what are the countries who are offering above 4.5 year program?
Philippines, few universities, Russia, all universities, Georgia, all universities, Bangladesh, all universities, Nepal, all universities. So these are the options which are fall into NMC new law. Third is this, that there should be a 1 year internship in that same country. So you also have to see that whether we are going to which country, are they offering us 1 year internship or not? If they are offering us 1 year internship, then that is also all right for us. And last but not least, fourth very important point is also which NMC wants to be followed by everyone. That is that wherever you are going, whichever country you are going, you should get the license to practice in that country. Okay, like you should be having license that you can practice just like that country's citizen are practice as a doctor in that country. So these four things you have to consider. So rest of the things regarding Georgia, regarding Bangladesh, we will be discussing on other countries also in our next webinar next week. Now, I would like to invite Mr. Umesh Khandelwal, who is co-founder of Mentor, and I will request him to explain us opportunities other than MBBS and other than NEET in the countries which are very popular among Indian students like Canada, US, Australia. So yes, sir. Ramesh sir, over to you. Yeah, thank you. So it was a nice introduction about our company and what we do. So today I'm starting with the topic which is studying abroad after 12th science bio for the programs other than medicine. So the topics I'm going to cover are why to go abroad to pursue undergraduate degree, what are the popular destinations, what are the popular study options, what could be the average cost of studying, the minimum eligibility criteria country-wise, and last but not least, the post-study benefits of studying the programs. So let me begin it with that. First of all, we have to understand that there is a big difference between studying medicine in abroad and at the same time studying any program other than medicine in abroad. The idea is something like this, that when a student is going abroad after 12th science bio to pursue medicine, the major reasons behind it are that they might not, because they might not be getting a medical admission in India, or the cost of studying medicine in India is out of their budget. So they are looking forward to good quality study options in abroad to pursue medicine at lesser cost, and with in some case with lesser marks in NEET. Okay, but the vast contrast in studying anything other than medicine abroad is this, that the student can pursue the same program in India in much lesser cost. So they are going abroad to study the same program at a higher cost, and they might be getting the admission in India as well, but still they choose to go abroad to pursue the same program at higher cost. These are the initial two differences. But the last and the most important difference is that when a student is going abroad to pursue medicine, their major aim is to either come back to India after completing their degree and to practice medicine in India. And in few cases, they also want to see the opportunities in migrating to some better countries after completion to settle down as a medical doctor. But if you are going to abroad after 12th science bio to pursue anything other than medicine, the biggest aim or ambition is to not to come back to India and to find settlement opportunities along with good career in those countries where you are going to study. And that is why we are even ready to spend the higher cost than what we would be spending in India for the same program. If I take a very simple example, if you are doing a BSc biology in India, you can complete the entire 3-year program maybe in less than 2 lakh rupees. But if you are going to study the same program in a country like Canada, USA or UK, you might be spending almost 15 lakh rupees per annum only on the tuition fees.
And in a country like USA or Canada, it would be a 4-year program, undergraduate degree. And in a country like UK or New Zealand, it would be a 3-year program. But still, the overall cost would be, there would be no match in the cost that you would be spending in India and to the cost that you would be spending in abroad. But saying all that, we have to understand why still a lot of students and the rate of students going abroad to study non-medical programs is increasing at almost the rate of 20% per annum. So why this sudden rate of increase in the student going after 12th to abroad is this, that if you take a simple example, we all study to make a good career and a sustainable career. So if I'm doing a very basic study like BSc biology in India, let's say it is covers in 1 lakh or 2 lakh rupees the entire course. After completion of a basic BSc biology in India, we might not be able to get any job, or if we are at all getting a job in our sector, in our field, we can hardly, I would say that you would be able to recover the cost in the first year. आपने 3 साल का पढ़ाई करा है, आपका वो 1.5-2 लाख में हो गया है, आप वो 1.5-2 लाख रुपए पढ़ाई पूरी करते ही शायद 1 साल में रिकवर कर लेंगे, लेकिन आफ्टर रिकवरिंग द कॉस्ट you are still earning the same amount, that is 1 lakh, 2 lakh or 3 lakh rupees per annum, which actually is nothing if you see the lifestyle that we want to maintain. And definitely we are not doing a BSc biology or a BSc biotech, or I'm going to tell you a lot more courses that students are doing in India or abroad. So definitely the cost of studying in India is cheap, but when you see the sustainability of career, you will see that that cost has nothing to do with the quality of life that we expect from those studies. At the same time, if you are pursuing the similar course in the country like USA, UK or Canada, again the ROI will be same. You would be recovering the entire cost of your studies most probably in the first year immediately after completion of your degree. But after that, you will be earning and growing at the same rate over there. So students see that ROI and the long-term benefits of career growth that they find in abroad, sustainability of career and a long-term sustainability, a higher rate of growth in abroad, which motivates them to study the similar programs in abroad. The popular countries are, first of all, the big 5 countries, the big 5 English speaking countries: USA, UK, Australia, Canada, New Zealand. Then there are European countries where students go after 12th science bio. The countries like France, Germany, Lithuania, Poland, Finland, Sweden. These are many popular European countries. Ireland, where the students after 12th, they are going every year, and the rate of is, as I said, is almost increasing at a rate of 30% per annum. Okay, so the popular 5 countries, the one of the advantage of going to these countries is that they are English speaking countries. So we do not need to learn any new language, because English is almost like a second language, and to some extent almost like a first language in India for studies. तो हम जिस लैंग्वेज को समझते हैं, हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज को पढ़कर ही हम जा रहे होते हैं वहां पर पढ़ने के लिए. दूसरा ये है कि these countries are very advanced, their curriculum is updated on very frequent basis. If you compare a very basic, I will again take the very basic example of BSc biology. अगर आप वो इंडिया के करिकुलम को चेक करेंगे, and the same curriculum you check in any other country, you will see that their curriculum is far more updated and far more advanced. आपको, they are preparing you for the future. They are not preparing you for the past or for the current, because आप आज पढ़ना शुरू करेंगे तो आज से ही आपको जॉब में या जॉब मार्केट में नहीं जाना है. After 3-4 years you would be entering the job market. तो आपको उस 2-4-5 साल बाद की स्थिति के लिए प्रिपेयर रहना है, एंड एट द सेम टाइम उससे भी आगे लगातार कई सालों तक आप कॉम्पिटेंट रहें, स्किल्ड रहें, जॉब मार्केट के लिए रेडी रहें. इस फोकस से ये सभी प्रोग्राम्स डिजाइन करे जाते हैं. If I could tell you the names of few programs which the Indian students are pursuing after 12th
biology are like the BSc Biotechnology, BA Psychology, Healthcare and Fitness Promotion of Early Childhood Education, all these popular programs, you would see that majorly in India, the student after completion of biology, they are just doing the courses like biology, other than medicine, biology or pharmacy or biotech. These are the popular programs. These are definitely the programs which are even popular in abroad for by the student, local students, domestic students, and as well as the international students coming from the countries like India. But they have lot more options for students to pursue, because see, you have to understand the courses are designed by the market forces. So what kind of jobs are available there, they design their courses according to that. They have a very different kind of economy, very different kind of lifestyle. So they need a different kind of professionals and service people to fill the gap of the service and the demand. Okay. So if I talk about country wise, the average cost of studying in USA would be around, I'm saying average, every time I'm using the word average because the cost could be a little lesser or a little higher than what I'm saying. So I'm just calculating the average cost of tuition fees in the US universities would be around 10 to 15 lakh rupees per annum. Okay. Same way, if you're studying in the country like Canada, it would be between 9 to 12 lakh rupees per annum. USA and Canada both offer 4 years of undergraduate degrees. And at the same time, if you're going to countries like Australia, New Zealand, UK, where they have mostly the undergraduate degrees of 3 years, their average cost per annum would again be around 15 lakh rupees for the tuition fees. The living expenses for any country you are going, you can calculate it in Indian currency at an average 5 lakh rupees per annum. तो अगर हम मोटे तौर पे हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट पर एनम का देखें तो इट वुड कम अराउंड 15 to 20 lakh rupees इंक्लूडिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस. लिविंग एक्सपेंसेस भी वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिटी वेयर यू आर गोइंग इन दैट कंट्री टू स्टडी. इंडिया में भी जैसे अलग अलग सिटीज का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग हो सकता है. इफ यू आर स्टडिंग इन अ सिटी लाइक बड़ौदा और इंदौर, तो आपका कॉस्ट ऑफ स्टडिंग थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम होगा. बट इफ यू आर गोइंग टू सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली हायर रह सकता है. राइट. स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो इंडिया में वो मिस करता है. एक सबसे बड़ा मिलता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर. सभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अट्रैक्ट करती हैं दुनिया भर के स्टूडेंट जो वहाँ के पढ़ाई कर रहे होते हैं. आप समझ लीजिए, हम आज की जनरेशन, आप और हम अगर पेरेंट्स भी हैं आज के सेमिनार में, तो हम सभी को कहीं ना कहीं आज ये दिख रहा है कि हम लोगों का बहुत क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन बढ़ गया है, क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन बढ़ गया है. ना केवल इंडिया के अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं हमारे डे टू डे के वर्क में, हम इंडिया के बाहर के अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ भी काफी सारा काम कर रहे हैं. इस समय पे हमको एक क्रॉस कल्चर नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. एंड व्हेन यू आर स्टडिंग इन अ कैंपस व्हिच बाय डिफॉल्ट इज गिविंग यू एन इंटरनेशनल क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस, तो आप बहुत अर्ली स्टेज पे फ्यूचर रेडी हो जाते हैं इस तरह के सेटअप में काम करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए. दूसरा एक बेनिफिट मिलता है, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, कि बहुत ही ज्यादा एडवांस करिकुलम होता है इन कंट्रीज के अंदर, अपडेटेड करिकुलम होता है. तो आप जब पढ़ रहे होते हैं, आई वुड गिव अ वेरी यूनिक एग्जांपल हियर. एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, जिसमें बताया गया था कि अगर आप ब्लैक होल में पहुंच गए हैं तो आप जब वहां 1 घंटा रहेंगे तो आप अर्थ पे ऑलमोस्ट उस समय तक 10-15 साल निकल गए होंगे. तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि जब आप किसी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपना 1 साल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय आप इंडिया से कम भी नहीं तो 5 से 7 साल एडवांस स्टडी कर रहे होते हैं. तो आप समझ लीजिए कि आप जब अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं उस समय पे आपका लेवल ऑफ स्किल्स, आपका लेवल ऑफ नॉलेज इंडिया के ज्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले करिकुलम से बहुत एडवांस होता है.
व्हेन आई से अबाउट करिकुलम, देखिए करिकुलम का ये सेंस ये है कि बेसिक पिक्चर करिकुलम की सेम रहती है दिखने में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मैच करेंगे, बट हाउ दैट पॉइंट, हाउ दोस थिंग्स आर डिलीवर्ड, उसमें बहुत फर्क होता है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज विच आर पॉपुलर अमंग इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वहाँ पे टीचर्स दे आर ऑल्सो वेरी अपडेटेड, एंड द मोड ऑफ डिलीवरी टू द स्टूडेंट्स इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. बहुत यूनिक तरह से पढ़ाया जाता है, स्मॉल क्लासरूम्स रहते हैं, ज्यादातर चीजें बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई जाती हैं. तो स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करते ही उसको पता होता है कि उन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. आज ज्यादातर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये आती है, दो इट इज डेफिनेटली इंप्रूविंग विद द टाइम, बट स्टिल अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. तो होता यह है कि इंडियन स्टूडेंट जब पढ़ाई अपनी पूरी करता है तो उसको उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है. इसीलिए इंडिया में सर्विस क्लास ज्यादा डेवलप होती है इंस्टेड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स किसी भी सेक्टर में. लेकिन जब आप फॉरेन में जाते हैं, यू विल सी दैट पीपल आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द जॉब्स, दो जॉब्स आर डेफिनेटली अवेलेबल इन एबंडेंस, बट दे आर नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द जॉब्स. Most of the innovations, most of the inventions are happening there because the students are taught not just the theoretical part, but they are also in a very good way are taught the application part कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करना है. एक तीसरा जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अब्रॉड जाके पढ़ाई करने का, वो ये होता है कि सभी कंट्रीज आपको पर वीक 20 आवर्स का काम करने का परमिशन देती है. अब आप ये समझिए कि ये एक बहुत मेजर कल्चरल डिफरेंस है इंडिया में और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में. हमारे यहाँ जनरली पार्ट टाइम जॉब्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है. मैं अगर अपने खुद के बिजनेस सेटअप की बात करूं तो वी डू नॉट नो हाउ वी वुड हायर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब. मैं अपने सेटअप में एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय को किस तरह की जॉब दूंगा. So we generally do not have the part-time jobs concept. But in the countries like USA, UK, Australia, Canada, New Zealand, France, Germany, Norway, Finland, Sweden, ये सभी countries के अंदर बाकायदा there are a lot of jobs, abundance of jobs which are created, defined in a hourly basis or on a part-time basis. इनका ज्यादातर बेनिफिट वहां की स्टूडेंट कम्युनिटी लेती है, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो. बहुत अर्ली स्टेज पे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं. दे स्टार्ट लर्निंग द डिसिप्लिन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, एंड एट द सेम टाइम दे स्टार्ट मेकिंग मनी. दैट वे दे स्टार्ट रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन. अब I would not say that the student would be able to recover the whole cost during study itself by working part time, but a good amount of their cost is recovered by working part time, which is not possible in India in most cases because we have seen that student अगर समझो वो एक कोई सर्टेन कोर्स कर रहा है, लेट्स से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, पर उसका ग्राफिक में बहुत अच्छा अपने खुद के पैशन के कारण उसने ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छा स्किल ले लिया है. तो अभी अगर वो कहीं पे ग्राफिक डिजाइनिंग की भी जैसी जॉब भी ढूंढेगा तो उसको ज्यादातर फुल टाइम जॉब्स ही ऑफर होंगी और वो पढ़ाई के साथ में वो नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को. लेकिन यही सब चैलेंजेस वहाँ खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप अपने पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. अपने आप को पार्ट टाइम जॉब का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आप उस कंट्री के लोकल कल्चर, सोशल सिस्टम को समझ सकते हैं. आप सिर्फ कैंपस के अंदर की दुनिया को नहीं समझते हैं. आप जिस कंट्री में गए हैं उस कंट्री के कैंपस के बाहर जो सब चल रहा है उससे भी आप बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और अपने आप को उस कंट्री के लिए फ्यूचर रेडी कर पाते हैं. बिकॉज एज आई सेड दैट ज्यादातर स्टूडेंट दे डोंट वांट टू कम बैक. तो वो तभी वापस नहीं आना चाहेंगे जब उनको वहां पे दे कैन सी दैट कंट्री एज देयर होम. और उस कंट्री को अपना होम समझने के लिए दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंट्री फ्रॉम द कोर, फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द बॉटम. तो पार्ट टाइम जॉब इस चीज में भी आपको काफी हेल्प करती है. इनफैक्ट अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, जहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आप जब वहां काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे आपको डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस आते हैं लैंग्वेज के, लेकिन बिकॉज आप लोकल पब्लिक के साथ में हैं तो आपका लर्निंग ऑफ दैट लैंग्वेज, वो जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाता है.
तो आप फ्यूचर रेडी हो जाते हैं उस कंट्री के लिए, बिकॉज नाउ यू ऑल्सो लर्न दैट लैंग्वेज। आप कोई एक जर्मन लैंग्वेज इंडिया की या किसी भी कंट्री की ट्यूशन क्लास में या लोकल क्लास में जाके पढ़ रहे हैं, तो अगेन एज आई सेड कि वो आपको थ्योरेटिकल सिखा देगा, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी आपको माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। बट इफ यू आर इन दैट कंट्री इटसेल्फ, तो धीरे धीरे आप क्योंकि प्रैक्टिकल भी अप्लाई कर रहे होंगे उस लैंग्वेज को अपने डे टू डे में, तो आप वो लैंग्वेज जल्दी सीख पाएंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो होता है पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा। आज की तारीख में हर कंट्री आपको पढ़ाई पूरी करने पर, पढ़ाई का आपको इनिशियली जो वीजा मिलेगा वो स्टडी वीजा मिलेगा, वो उस ड्यूरेशन जितना मिलेगा जितनी ड्यूरेशन के आपका इनिशियल कोर्स है। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो 3 साल का वीजा मिलेगा, 4 साल की डिग्री है अंडर ग्रेजुएट तो 4 साल का वीजा मिलेगा। तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद में अगर बहुत पहले का समय देखें तो ज्यादातर स्टूडेंट को लौट के अपनी कंट्री आ जाना होता था, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव द वीजा टू कंटिन्यू स्टेइंग इन दैट कंट्री लीगली। बट नाउ ऑलमोस्ट एवरी कंट्री they have understood the purpose, the vision of a student who are coming there, and because they are बहुत ज्यादा शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्स की, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो आपको पढ़ाई पूरी करने पे अलग अलग कंट्री अलग अलग ड्यूरेशन का पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा देती है। जैसे अगर हम कनाडा की बात करें, मैं पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा को तो और डिटेल में थोड़ा भी आगे समझाऊंगा, पहले मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ आप लोगों को कंट्री वाइज। कनाडा में अगर आप कोई भी पढ़ाई जो 1 साल की है वो कर रहे हैं, कनाडा में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अदर देन द डिग्री। आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस बहुत हैं कनाडा में और बहुत पॉपुलर हैं। दीज ऑप्शंस आर ऑफर्ड बाय द कैनेडियन कॉलेजेस। कैनेडियन कॉलेजेस आर द कोर सप्लायर्स ऑफ द इंडस्ट्री रेडी पीपल टू द इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। जितनी भी कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं उसमें कनाडा एक ऐसा यूनिक कंट्री है जहां पे डिग्री प्रोग्राम्स भी पॉपुलर हैं और साथ साथ में उनके नॉन डिग्री यानी कि डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम both at the level of undergraduate and as well as at the level of postgraduate are very popular. तो अगर आप कोई भी तरह का अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं विच इज ऑफ 1 ईयर या लेस देन 2 इयर्स, तो आपको पढ़ाई पूरी करने पे 1 साल का परमिशन मिलेगा, अनकंडीशनल परमिशन मिलेगा टू स्टे इन दैट कंट्री, टू वर्क फुल टाइम। पढ़ाई के दौरान तो 20 आवर्स ही आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 साल तक आप फुल टाइम काम कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। वो 1 साल बाद क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी तरह से अगर यूके में आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे आपको मिनिमम 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। तो वो 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में आपको 2 साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है। वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो वहां पे 1 साल से लेके 5 साल तक का जॉब सर्च वीजा मिलता है पढ़ाई पूरी करने पर, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से रीजन में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरी कंट्री को अलग अलग रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आप कौन से रीजन में पढ़ाई कर रहे हैं, दे वांट टू प्रमोट सर्टेन रीजन्स, वो चाहते हैं वहां पे ज्यादा स्टूडेंट आए। व्हेन यू आर गोइंग देयर स्टूडेंट दे आल्सो सी यू एज अ फ्यूचर एम्प्लॉइज। तो अगर आप उस कंट्रीज में जा रहे हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप उन रीजन्स में जाके पढ़े जहां पे अभी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है और जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की। तो ऐसे ऐसे रीजन्स में आप पढ़ने जाएंगे तो आपको पढ़ाई पूरी करने पे ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ज्यादा मिलेगा। न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही है। यूएसए आपको ओपीटी और सीपीटी के तौर पे पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा देता है। अगर आप स्टेम बेस्ड कोर्स में जा रहे हैं तो आपको 3 साल का मिलता है। नॉन स्टेम बेस्ड यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से अलग प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 1 साल का मिलता है। तो इस तरह के सभी आपको पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा ऑप्शंस दे रहे होते हैं। फ्रांस आपको 1.5 साल का देता है, जर्मनी आपको पढ़ाई पूरी करने पे 1.5 साल का जॉब पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा देता है। पर क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? देयर आर मल्टीपल रीजंस। मैं किसी रैंकिंग ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ। बिकॉज फॉर एवरी स्टूडेंट all these different reasons have their own individual ranking as per their own aspirations. पहला है उनको पता है कि आप अपनी कंट्री में पढ़ाई शायद बहुत कम सस्ते में कर लेते हैं, आप वहां पढ़ने आए हैं, काफी ज्यादा कॉस्ट आपने इन्वेस्ट करी है, तो पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा आपको एक फेयर
ग्राउंड देता है टू रिकवर योर कॉस्ट ऑफ स्टडी। आपको किसी तरह के वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, किसी तरह के अदर वाइज परमिशन जरूरत नहीं है। आपको एक बार ये ओपन वर्क परमिट मिल गया, इसको ओपन वर्क परमिट भी आप कह सकते हो, वो क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो आपको मिला हुआ है, तो आपको हर तरह का लीगल, फुल टाइम, पार्ट टाइम, मल्टीपल जॉब्स करने का राइट मिल गया है, सो दैट यू कैन रिकवर योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फास्टर एंड सूनर। दूसरा एक मेजर रीजन ये है कि आज की तारीख में हमें से कई लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि पीपल आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन अब्रॉड, बट मोस्ट ऑफ देम फेल टू गेट अ जॉब इन अब्रॉड। रीजन ये है कि हो सकता है कि आपकी जो भी ये है व्हाट यू से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने एक सिस्टम बना रखा है कि अगर एक एम्प्लॉयर, सपोज वो इंडिया का एम्प्लॉयर है, सपोज इफ आई टेक माय ओन एग्जांपल, इफ आई फाइंड अ वेरी गुड इमिग्रेशन लॉयर इन कनाडा, और मैं उनसे ये कहता हूं कि आप कैनेडियन सिटीजन हैं, आप बहुत अच्छे इमिग्रेशन लॉयर हैं, आप इंडिया आ जाइए, स्टार्ट वर्किंग फॉर मेंटर एंड आप इंडिया सेटल हो जाइए, मैं आपको वहां आप कनाडा में ज्वाइन कर रहे हैं उससे भी बेटर सैलरी ऑफर करूंगा, एंड आई थिंक ही वुड बी विलिंग टू कम टू इंडिया। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट डू इट, because to hire an international employee, first of all I need to be a designated employer. Designated employer means जिस तरह से बंदूक चलाने के लिए इंडिया में लाइसेंस जरूरत होती है, वैसे दुनिया भर में आपको इंटरनेशनल हायरिंग के लिए सबसे पहले आपकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। There are certain criteria to fill, then only an employer can get a license of a designated employer so that they can start hiring their staff from across the borders. तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगेन आई एम द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर और मैं कनाडा के उस नागरिक को हायर करना चाह रहा हूं और मैं उसको बुला भी लेता हूं। खैर इंडिया की स्टोरी में तो ऐसा होने की चांसेस कम है, पर समझो ये स्टोरी रिवर्स हो जाए, some Canadian is hiring a good skilled person from India, they might have a fear कि मुझे हायर कर लिया, मेरा रिज्यूमे, मेरा पर्सनल इंटरव्यू जूम पे लेकर और अदरवाइज लेकर उन्होंने मुझे हायर कर लिया है, आई एम टैलेंटेड इनफ टू गेट दैट जॉब, वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, मुझे हायर कर सकता है। उसको सबसे पहले हायरिंग के बाद में मुझे वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर करना पड़ेगा। Then only once he sponsors me with that sponsorship letters, I could be able to apply for a work permit in the Canadian Embassy in India. अब मैं वो वर्क परमिट लेकर वहां जाता हूं तो उस एम्प्लॉयर को एक डर हो सकता है कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचकर कभी भी उसके यहाँ पहुंचू नहीं और उसके बाद में मैं वहां से गायब हो जाऊं, भाग जाऊं, कहीं कुछ भी कर दूं, या समझे मैं पहुंच भी गया उसके यहाँ पर, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ वर्क परमिट मैंने कोई इस तरह का क्राइम कर दिया जो कि अगेंस्ट द लोकल लॉ है। तो इन दोनों स्थिति में अगर मैं एयरपोर्ट से भाग गया या मैंने कोई क्राइम कर दिया बिकॉज दैट एम्प्लॉयर हैज स्पॉन्सर्ड मी, तो मेरे इलीगल एक्टिविटी का खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, एंड दे कैन ऑल्सो उनकी जो रेटिंग है एज अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर वो डाउन हो सकती है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर चाहकर भी इंटरनेशनल एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ स्पॉन्सरिंग यू। लेकिन जैसे आप वहां उस कंट्री में पढ़ाई करते हैं और आपके पास एक ओपन जॉब परमिट आता है, उस समय पे यू द एम्प्लॉयर डू नॉट नीड टू हायर यू बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ ओपन लाइसेंस टू वर्क। आप डे वन से किसी भी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बैंक, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं because for that period the government is sponsoring you, that employer has no responsibility of your character or of your legal acts or illegal acts. Okay, इस पीरियड में जिस समय तक आप ओपन जॉब परमिट में हैं, आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, इफ योर एम्प्लॉयर फाइंड्स यू टैलेंटेड, गुड, स्किल्ड, ऑनेस्ट और जो भी उनको चाहिए आपसे क्वालिटीज, वो क्वालिटीज आप में हैं, तो दे कैन कंटिन्यू टू your job even after completion of your open work permit. In that condition they would even be ready to sponsor you for the work permit to extend your visa. अदरवाइज ज्यादातर कंट्रीज जो आपको इस तरह से जॉब परमिट दे रही है, इन्होंने जॉब पर ओपन परमिट की ड्यूरेशन इस तरह से डिफाइन कर रखे हैं कि ज्यादातर केसेस में आप अपना ये ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद में उनके यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंटशिप पीआर की फाइल लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, and you will rarely see someone who has studied abroad. They come back to India,
because they didn't get the settlement opportunity. अगर कोई इंडिया आ भी रहा है पढ़ाई पूरी करने के बाद में, तो वो इसलिए आ रहे हैं, 2-3 रीजन हो सकते हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग देयर मदरलैंड, दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर इंडिया, or else because their skills were so good that they acquired in those colleges and universities that they are getting much better career opportunities in India in certain sectors. Otherwise, ज्यादातर स्टूडेंट जो अब्रॉड जा रहे हैं, उनके लिए वो वन वे जर्नी होती है, वो वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, वहीं सेटल होते हैं, और दिस वे दे मेक अ ग्रेट करियर फॉर देमसेल्व्स. आज के सेशन में मैं अभी इसको हम लोगों ने क्रिस्प और स्मॉल सेशन बनाया है. इफ यू पीपल लाइक दिस सेशन, हम लोग कंट्री वाइज यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के लिए इंडिविजुअल कंट्री वाइज भी सेशन ले सकते हैं कि 12 बायोलॉजी के बाद में वहाँ पढ़ने में आपको डिटेल में क्या क्या कोर्स ऑप्शंस हो सकते हैं. थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी पे 1-2 चीज़ और बता देता हूँ. एक जनरल एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास 12 साइंस बायोलॉजी के अंदर मिनिमम 50% होने चाहिए. जितना ज़्यादा आपके पास परसेंटेज होगा, आप समझ लीजिए, स्पेशली ये बिग 5 कंट्रीज, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दीज कंट्रीज आर वेरी लिबरल इन स्कॉलरशिप्स. हमारे अपने काफी सारे स्टूडेंट इन कंट्रीज में ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रहे हैं. ये कंट्रीज टैलेंट को अट्रैक्ट करती हैं. आपके लिए एज सच जो आप समझिए कि जो उनकी फीस का, ट्यूशन फीस का जो चार्ट है, उस हिसाब से तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वेरी लिबरल इन गिविंग यू स्कॉलरशिप. इफ यू आर मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो आपको वो स्कॉलरशिप देने में बिल्कुल झिझकेंगे नहीं. दे रियली वांट टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड स्टूडेंट, जो उनके लिए एक अच्छा एलुमनाई बन सकता है फ्यूचर के लिए, और उसके लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देते हैं. द स्कॉलरशिप टू रेंज फ्रॉम 10% of tuition fees to up to 100% of scholarship, and sometimes even 150% or 200% of the tuition fees. तो ये scholarships पाने के लिए हमको क्या करना होता है? पहला होता है कि हमको एकेडमिकली जितना अच्छा होंगे, उतना बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और उतने ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए हम एलिजिबल होंगे. दूसरा होता है कंट्री लाइक यूएसए. यूएसए के लिए स्पेशली मैं चीज बता रहा हूँ, वहां पे सेट या एसीटी, इसमें से कोई भी एक एग्जाम आप दे सकते हैं. दीज आर द स्कॉलरशिप एज वेल एज द एडमिशन टेस्ट. अगर आप इनके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं. काफी सारी यूनिवर्सिटीज में सेट एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, काफी सारी में ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं भी है. स्टिल इफ यू आर राइटिंग द सेट एग्जाम एंड स्कोरिंग गुड स्कोर, आप उन यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ा लेते हैं अपने लिए, जहां पर कि सेट कंपलसरीली मांगा नहीं गया है. इसके अलावा एक और टेस्ट होता है वो जनरली स्कॉलरशिप में आपको ज्यादा मदद नहीं करता है, पर वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में, वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अलग अलग बॉडीज कराती हैं. एक टेस्ट होता है IELTS, जो कि IDP ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करती है. एक टेस्ट होता है टॉफिल, एक टेस्ट होता है PTE. ये सभी टेस्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, आप इनमें से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं. ज्यादातर टेस्ट सभी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं. आपने टॉफिल दिया है या PTE दिया है या IELTS दिया है, इनकी एक मिनिमम स्कोरिंग होती है. IELTS में दे माइट बी एक्सपेक्टिंग 6 बैंड और 6.5 बैंड्स, 9 बैंड्स का एग्जाम होता है. आपकी लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स देखी जाती है. सेम वे टॉफिल में भी यही 4 स्किल्स देखी जाती हैं. दे माइट बी एक्सपेक्टिंग around 85 score from you out of 120. Similarly, PTE के अंदर they might be expecting a 55 to 60 score from you. तो इस तरह के टेस्ट आपके लिए इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में पढ़ने जाना चाह रहे हैं जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, और आप उस कंट्री से पढ़ने जा रहे हैं जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया में इंग्लिश इज ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट लैंग्वेज. तो काफी सारी कंट्रीज और काफी सारी यूनिवर्सिटीज, अगर आपके 12th में इंग्लिश हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, तो इंग्लिश में अगर अच्छे स्कोर आए हैं, 70+ स्कोर आया है इंग्लिश सब्जेक्ट में इन योर 12th, और आपका ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छा है, तो कंट्रीज लाइक यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड यूएसए, दे इवन गिव यू द वेवर फ्रॉम द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. वो IELTS, टॉफिल, PTE कुछ भी नहीं देना होगा आपको, एंड यू कैन गेट एन एडमिशन ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ योर 12th इंग्लिश स्कोर एज वेल. अदरवाइज इन कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंपलसरी रहेगा, वो वीक नहीं होगा.
पर काफी सारी दूसरी कंट्रीज आपको वेवर देती हैं। तो इस तरह से आप एलिजिबल भी हो सकते हैं एडमिशन के लिए, और साथ में स्कॉलरशिप्स के लिए भी। एक जो इसका मंत्रा है कि हाउ टू मेक योरसेल्फ मोर एलिजिबल फॉर द बेटर यूनिवर्सिटीज एंड फॉर द बेटर स्कॉलरशिप, तो वो है टू स्टार्ट अर्ली। कम से कम हमको किसी भी कंट्री में पढ़ने जाना है, उस कंट्री का जो भी इनटेक हम टारगेट कर रहे हैं, मेजरली द मेजर इनटेक इन एवरी कंट्री सितंबर इनटेक, उसके बाद में माइनर इनटेक आता है, किसी में वो जैन इनटेक होता है, किसी कंट्री में वो मार्च इनटेक होता है, और एक सुपर माइनर इनटेक आता है विच इज मई और जून। तो सितंबर इनटेक में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं टू अप्लाई फॉर। पर आप जो भी इनटेक टारगेट कर रहे हैं उससे कम 7 से 8 महीने पहले आपको अपना एप्लीकेशन चालू कर देना चाहिए, which increases your chances of admission to the better universities, और आपको स्कॉलरशिप्स के लिए और दूसरी काफी चीजों के लिए काफी अच्छी मदद मिल जाती है। तो अर्ली बिगनिंग इज डेफिनेटली बहुत मैटर करती है आपके केसेस में। लेट बिगिन करते हैं तो हमारे पास काफी ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं, हमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे अगर 100 प्रोग्राम्स अवेलेबल है सितंबर इनटेक के लिए, पर आप सोच रहे हैं कि अभी अप्लाई करें, तो आज की तारीख में ज्यादातर कंट्रीज के सितंबर इनटेक के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा जनवरी इनटेक के लिए या मार्च इनटेक के लिए। लेकिन जनवरी और मार्च में 100% प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हो सकता है सर्टेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, पर वो प्रोग्राम अगर जैन या मार्च में अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सितंबर टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। लेकिन अगर आपने अपने 12th जब आप पढ़ रहे हैं और उसके जनवरी में ही अगर आपने प्लानिंग कर लिया, एप्लीकेशन प्रोसेस चालू कर दिया है, तो आप उसी साल के 2022 मई में मैं अपना 12th पूरा करूंगा, पर 2022 सितंबर में ही मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज आपके 12th बोर्ड के रिजल्ट का वेट नहीं करती हैं। 12th बोर्ड का प्रोजेक्टेड मार्कशीट जो आपकी स्कूल खुद बना के देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th एंड 11th परफॉर्मेंस, उस बेसिस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। तो इस तरह से आपके लिए अर्ली बिगनिंग डेफिनेटली आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज रहती है। पर जनवरी इनटेक में अब अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो जैन इनटेक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है वो जैन में भी अवेलेबल हो, तो आपके लिए यू कैन से यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग इन दैट वे। Anyway, so as I was saying that this was you can say a general discussion about the studying abroad after 12th science bio for the programs other than medicine. हम लोग आगे फ्यूचर वेबिनार्स में कंट्री स्पेसिफिक और बहुत डिटेल्ड वेबिनार्स भी करेंगे। बिफोर समिंग अप for today webinar, if any one of you have any queries, please feel free to ask me. You can type or you can speak. Unmute yourself and speak. Good morning, sir. Mr. Rupesh. Yeah, good morning. Good morning. We were actually keen on the medicine course, and we were wanting to know, like generally, like will you do a separate seminar for that, or if some basic information would be given to us, like if we are looking at the possibility of Philippines, when do the colleges start? When we should start the preparation and all that? So, sir, you have to unmute yourself. Process for MBBS is already started. And according to the new NMC law, the universities and colleges already updated their programs. So for that, we will be sharing you the fee structure and class. You have to start the process. You first of all, you please send your 12th mark sheet to Kamakshi ma'am. You must be having Kamakshi ma'am's number. You please Yes, share there, and then we will be sharing universities details, and then we will also be checking the eligibility, and then we will start the process. The first, we required 12th mark sheet and Aadhaar card. And once we find you eligible, we will share the link for payment of 21,000 rupees. That is the first fees and first token amount to book the seat.
Before that, you can select university, and we will also help you to selecting the university. We will share some options. Out of that, if you have any query, you can ask us the query and finalize. So my question was like, if it is already started, right? The course has already started. Yes, yes. Oh, so if we start now, do the process and all, like if we send the marks card and all the other things. So when will our children be able to join? September intake. Oh, this September there is an intake. Yes, there is an intake. Okay, sir. So then let me confirm the number of that you. Yeah. There was a number that was listed. So if we send the marks card and Aadhaar card, you said, right? Yes. So if we send it, then we will be able to have some information, eligibility information. Yes, definitely. Yes. Okay. That is the start of the process. If you are live, you can please type your number in the chat box so they can contact you if they miss your number. And yeah, so 77596, does it the one? Is that the one? Yeah, correct. Yes, sir. Their query was they either might be confused that the classes have already started doesn't mean that the first year MBBS classes have not yet started. So you are not going to miss any curriculum or any classes. The first year medical classes will start from the September 2022. And when the Indian students will go, they would be in the fresh and they will be starting from day one. So you have enough time to process and to go in time. Yes, sir. So that is our concern, because if the paperwork processing and all will be late, so that's what this one was. So we will send actually the marks card and the Aadhaar card to Kamakshi madam now. Okay. Yeah. So when will you do the seminar on the medical education there? Yeah, next is on, I think, Monday. Okay, sir. So Monday, same time? Yes, same time. Yeah. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much, guys. Let's see you again on Monday and our next webinar. And please come up with a lot of queries. We are ready to solve. We will be sending you to good universities and colleges. Either it is for MBBS program or other programs which are relevant to 12 Science Bio students. We do Canada, we do US, we do Australia, we do UK, we do Germany, we do Philippines, we do Georgia, we do everything which is good for students. Thank you very much.